Good evening and welcome. You're watching 6 p.m. Prime. I'm Pooja Shali. Global terror group Al-Qaeda has jumped into the hijab controversy that had erupted in Karnataka in January. Now, this is the latest video. The Al-Qaeda chief, Ayman al-Zawahiri, is expressing support for Muskaan Khan. Remember the girl whose visuals had gone viral? She was wearing a burqa and shouting slogans during the hijab row in Karnataka. This is the latest video released of al-Zawahiri and is important because he was rumored dead in 2020. So what does he say? He praises Muskaan Khan, who had confronted a group of students protesting against the veil in educational institutions. She had shouted, remember, aloud, Allahu Akbar slogans while responding to the Shree Ram chants of other students. So what exactly did the terror outfit chief say in this video on your screens? It's a 9-minute video titled and accompanied by a poster reading "The Noble Woman of India" with the viral image of Muskaan Khan. This video has been released by the official Al-Qaeda mouthpiece Shabab media. He's a terrorist. Remember, terrorist Zawahiri calls this girl his noble sister and dedicated even a poem praising her courage. Not just that, Al-Qaeda leader then goes on to appeal to Indian Muslims to raise their voice on the hijab controversy and other oppressions. Importantly, also with this video, he has confirmed suspicions that he is not dead after all. Now, the government and intelligence agencies have taken note of this video, but also it's been now a political reactions that are coming in. Karnataka Home Minister Araga Janendra has said that he was shocked that the hijab row has reached an international level to an extent that even globally designated terror groups have now reacted and has assured, the government has assured that this issue will be taken up very strongly. Listen in to now first what was said in the video and the reactions. فكتبت هذه العبارات رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة على ضعفها. شمخ الحجاب مكبرا لن أستكين، هتف الحجاب تعلموا مني اليقين. أنا عزة الإسلام رغم الحاقدين، أنا بنت إسلامي وعز المسلمين. أنا صرخة المظلوم ضد الظالمين وثبات مؤمنة بوجه المعتدين. أنا هبة المغصوب ضد الغاصبين. أنا نهضة المسلوب والمستضعفين. That is, remember, the globally designated terror outfit, terror group, Al-Qaeda, known to have launched attacks across the world reacting to the hijab row. Take a look now at what the politicians here in Karnataka and in Delhi saying on this video. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಗಳು ವರ್ತನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಕ್ಕೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ पता है ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತವೆ. अल-Qaeda संगठन और भारत को कोई संबंध नहीं है. वो हमारा भारत का अगेंस्ट का एक संगठन है. और वो नायक जो अभी बात किया है वो अभी तक अंडरग्राउंड में थे. किधर थे, मरे या जिंदा है तो मालूम नहीं था. वो अभी भारत के बारे में बात करने का कोई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये अभी मैं पहले से बोल रहा था, इसको इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है. ये भारत को अपराधी स्थान में रखने का एक साजिश है बोल के मैं पहला दिन से बोल रहा हूँ. मैं समझता हूँ ये वही व्यक्ति कहेगा जिसको भारत के संविधान और कानून में भरोसा नहीं हो. वो अल-कायदा का हो सकता है, ISI का हो सकता है, वो अन्य संस्थान का हो सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करता हो. भारत का कोई नागरिक जो भारत के संविधान में भरोसा रखता है वो ऐसी बात नहीं करेगा. The manner in which the Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri is trying to use the hijab issue in order to provoke and incite a section of people in India, it shows once again
that hijab केवल बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है. Unfortunately, some political parties in India try and polarize and incite a particular vote bank for the sake of appeasement politics by spreading misinformation and misinforming in the name of uniform. So the girl who's found a mention in the poster and even a poem dedicated to her by the Al-Qaeda chief, her family has now reacted. Muskaan's father has spoken and he's saying that their family does not need support from the Al-Qaeda chief. Listen in to what the father has to say. ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅದೇನೋ ಅರಬಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳವ್ರೆ ಅವರು, ಬಟ್ ನನಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತಪ್ಪು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. So just in case you're wondering why is this video so significant and who is al-Zawahiri, remember he is now the chief of the terror outfit Al-Qaeda, and I have now explained clearly what does this mean. Let's take a look one by one. Remember, at this point with this video coming up, it is a security scare and it is something that the government needs to take cognizance of, because remember, since 2011 when Osama bin Laden was killed by the US Navy SEALs, it was this man who's now taken control of Al-Qaeda, that is Ayman al-Zawahiri. He's also been a close aide of bin Laden, but not just that, he's often considered to be the man behind Laden for the 9/11 attacks that took place in the United States of America. What does it mean? Who was he? Just at the age of 14, when he turned a teenager, he joined the Sunni Islamist group and the Muslim Brotherhood, just when he was a teenager. But then he also founded the Egyptian Islamic Jihad to oppose the democracy in Egypt that happened in the 1970s. Interestingly, he's actually a doctor surgeon. He's a physician. He educated and got himself the education of medicine, but turned into a terrorist after that. What about the attacks that has been unleashed by him or organized? Pakistan and Bangladesh, in areas where hijab was not made compulsory, he's known to have organized attacks there as well in the subcontinent. Not just that, in 1993, according to the FBI, he's considered to be the brain behind the assault of the US soldiers. 5 years later, 1998, he's believed to have launched attacks on US embassies in East Africa, including Tanzania and Kenya. And then possibly he's the one to have considered, according to security agencies, of having organized suicide missions in 2000. And therefore, even with the US taking note of him, there is a $25 million reward on al-Zawahiri just for at least giving information about this terrorist. That is why he's not just any man, and that is why when this video is out, it is important that it needs to be taken cognizance of. And now when we go across to our reporters who've been tracking not only the hijab row, but all the repercussions that have come with it, the communal overtones, and we all remember the viral videos that had come up. Let me now go across to my colleague, Arvind Ocha. Arvind, because you've been tracking the latest, not only what happened in Karnataka, what is unfolding, this was a fear that the terror groups will cash in and latch on to what happened and unfolded in Karnataka. Intelligence agencies किस तरह से इस वीडियो को देख रही हैं? क्या seriously लिया जा रहा है इस वीडियो को? Arvind. जी देखिए, बिल्कुल सीरियस लिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जब कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ था, उस दौरान भी इंडिया टुडे ने बाकायदा आईबी की रिपोर्ट के जरिए ये बताया था कि किस तरीके से जो कर्नाटक में हिजाब पर विवाद है, उस पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई वो सोशल मीडिया के जरिए माहौल भड़काने की कोशिश कर रही है।
अब अल-कायदा का ये जो वीडियो कल रात को ये जारी किया है अल-कायदा के मीडिया विंग शबाब ने, जिसमें अल-जवाहिरी बाकायदा ये कह रहा है कि खास तौर पर जो मुस्कान खान है उसके लिए कविता पोएम पढ़ रहा है। उसके अलावा ये कह रहा है कि जो भारत के मुसलमान हैं उनको विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्टर्न कंट्री जहाँ पर हिजाब बैन है वहाँ उन कंट्री को उसने लताड़ लगाई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि दरअसल इस वीडियो के जरिए अल-कायदा अपनी एग्जिस्टेंस भी दिखाना चाह रहा है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने अल-कायदा की कमर तोड़ी, उसके बाद से अल-कायदा जो टेरर ग्रुप है वो काफ़ी बैकफुट पर चला गया था और कई बड़े उसके टेररिस्ट वो मार गिराए गए थे। 2020 में अल-कायदा अल-जवाहिरी के मौत की खबर आई थी। उसके बाद नवंबर 2021 में एक के बाद एक उसके वीडियो आते हैं और अपने आप को वो बताता है कि वो जिंदा है। लेकिन इस वीडियो के जरिए भारत में खास तौर पर हिजाब के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश यहाँ पर ज़्यादा की गई है, क्योंकि किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का किसी दूसरी कंट्री के लोगों से बहुत लेना देना नहीं होता, चाहे वो किसी भी ग्रुप के लोग हों, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों। तो दरअसल सेंट्रल एजेंसी का मानना है कि जो अल-कायदा है वो हिजाब की आड़ में इंडिया में किसी तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश करना चाहता है या लोगों को भड़काने की कोशिश करना चाहता है। Arvind, please keep tracking all the latest, and I'll quickly just update what Arvind Oja has said. He said that the agencies, the intelligence agencies, will look at how Al-Qaeda terror groups will try to use these incidents with these videos, perhaps more brainwash, radicalize, and also create more violence, communal violence in the country, and that is why this is being taken seriously by the agencies, and I'll be tracking all the latest on that. Al-Qaeda releases a video and supports the incident that took place in Karnataka.